If you still haven't subscribed to my channel, then please click the red button and then the bell icon to be the first to watch my videos. Thank you. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कुछ पढ़ा था इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ा था क्या होता है, देन केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन हमने दो तरह का पढ़ा था, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। तो हाउ टू कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबॉलिक एंड सिंबॉलिक इनटू वर्ड। तो आज हम कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कि convert the word equation into symbolic equation and symbolic into word equation. So let us start. Word equation convert word equation into symbolic equation. Word equation into symbolic equation. Now first is barium chloride BaCl2 means barium chloride react with sodium sulfate. This is the aqueous, and you already know aqueous means the solution in water, means barium chloride dissolved in water is known as aqueous solution. And similarly this barium chloride react with sodium sulfate. It gives barium sulfate. This is also aqueous. Barium sulfate. This is solid, and plus sodium chloride. This is aqueous. So this is converted into, this is the word equation, and this is converted into symbolic equation. So how to convert? You already know the symbol of the chemical formula of barium chloride is BaCl2. This is aqueous, and this is react with sodium sulfate, and the formula of sodium sulfate is Na2SO4. मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका है प्रीवियस क्लास में, वैलेंसी एंड हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो ये सब फार्मूला कैसे बनाते हैं वहाँ पे हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट एक्वस गिव्स फार्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट इज BaSO4, and this is solid means precipitate, and the symbol of precipitate is downwards arrow, and sodium chloride is NaC, and this is also aqueous. Okay, this is the first conversion, word equation into symbolic equation. Now your second is, this is the word equation. silver nitrate aqueous plus sodium chloride aqueous, both are react together to give silver chloride solid and plus sodium nitrate. This is aqueous.
तो this word equation is converted into symbolic equation. So you have to write here symbolic equation. So the formula of silver nitrate is AgNO3 because the valency of silver is 1 and valency of nitrate is also 1. So formula is AgNO3, and this AgNO3 is react with sodium chloride. You already know सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है NaCl. Both are react together to form silver chloride, and the formula of silver chloride is AgCl. And this is the solid means precipitate, and this is the white PPT, and plus sodium nitrate is NaNO3. This is aqueous. Okay, now next word equation is lead nitrate aqueous and plus potassium iodide. This is also aqueous. Aqueous means the salt which is dissolved in water is known as aqueous solution, and both are react together to form lead iodide, and this is the solid, and plus potassium nitrate. This is also aqueous. So this word equation is converted into symbolic equation. The formula of lead nitrate is PbNO3 whole twice, this is aqueous, and plus potassium iodide is Ki, this is also aqueous, and it is converted into lead iodide, and the formula of lead iodide is PbI2, and this is the solid means precipitate. So and potassium nitrate is KNO3, and balance the equation. ओके इसके जस्ट बाद हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वहाँ पे समझेंगे कि कैसे बैलेंस हो रहा है. ठीक है. योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम कार्बोनेट is converted into calcium oxide and carbon dioxide, and the formula of calcium carbonate is CaCO3, and this is converted into CaO. Calcium oxide formula is CaO and carbon dioxide formula is CO2. Okay, so this is the word equation, this is the symbolic equation, this is word equation, and this is symbolic equation. Okay, your next example is hydrogen plus oxygen gives water. You can see here the formula of hydrogen is H2 and formula of oxygen is O2, and both are react together to form water molecule. इसके बाद हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. Here hydrogen is 2, oxygen is 2, oxygen is
1, मल्टीप्लाई विथ 2 एंड हियर आल्सो 2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हाउ टू कन्वर्ट सिंबॉलिक इक्वेशन इनटू वर्ड इक्वेशन। तो सिंबॉलिक को भी हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कभी कभी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ देता है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू गिव सॉलिड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इस फॉर्म में भी हम उसको रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि कन्वर्ट द सिंबॉलिक इक्वेशन इनटू वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हमने वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, इस सिंबॉलिक इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ओके, तो यू कैन सी हियर कन्वर्ट सिंबॉलिक इक्वेशन into word equation। Convert symbolic equation into word equation। So your first symbolic equation is you can see here PbNO3 whole twice on heating it is converted into PbO plus NO2 plus O2 and this is the gas and this is also gas। So this is the symbolic equation and this symbolic equation is converted into word equation। तो how to convert it देख लेंगे यहाँ पे। तो दिस इज पीबी मीन्स लेड, NO3 नाइट्रेट, तो दिस इज नोन एज लेड नाइट्रेट एंड दिस इज सॉलिड एंड दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। दिस ट्रायंगल इज द सिंबल ऑफ हीट। तो यू कैन सी हियर एंड PbO is known as lead oxide, this is lead oxide and NO2 is known as nitrogen dioxide, this is also gas, this is a gas and O2 is the oxygen gas। ओके, तो इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड सिंबॉलिक इक्वेशन इज हाइड्रोजन is H2, this is a gas and this is react with Cl2, this is chlorine is also a gas and both are react together to give HCl। okay, this is also a gas। तो here H2 is the, इसको इस वर्ड इक्वेशन को दिस सिंबॉलिक इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो H2 is the hydrogen plus this is a gas and Cl2 is the chlorine, this is also a gas and both are react together to form hydrochloric acid, this is also a gas। okay, and your third example is iron is Fe and this is react with CuSO4 copper sulfate, this is aqueous and iron is a solid, both are react together to form FeSO4, this is also
aqueous plus Cu, copper is a solid. So see here, iron, Fe is the iron is solid, plus CuSO4 is copper sulfate, and copper sulfate is aqueous, and both are react together to form iron sulfate, iron second sulfate. This is aqueous and plus copper. So you can see all the symbolic equation is converted into word equation. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड इन थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कैसे सिंबॉलिक इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करें। अब हम कुछ अगर कोई क्वेश्चन जैसे दे दिया, ऐसे ही लैंग्वेज में दे दिया कि मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, कन्वर्ट इनटू वर्ड इक्वेशन, तो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट कि बेरियम क्लोराइड is when barium chloride is react with potassium sulfate to give barium sulfate and potassium chloride. Convert into symbolic equation. तो how to convert it? तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? When barium chloride react with potassium sulfate to give barium sulfate and potassium chloride, convert into symbolic equation. तो सिंपल सी बात है, सब फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 and this is always aqueous and plus react with potassium sulfate. तो symbol of potassium sulfate is K2SO4. This is also aqueous because reaction is always possible in aqueous medium because solid reaction cannot be possible in this case. Okay, कि हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड सॉलिड एंड पोटेशियम सल्फेट सॉलिड, दोनों रिएक्शन देगा या नहीं देगा? तो हम बोलेंगे नहीं देगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में ही होगा। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस, पोटेशियम सल्फेट एक्वस, बोथ आर रिएक्ट टुगेदर टू गिव बेरियम सल्फेट। फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट इज BaSO4 और ये बनाएगा हमारा सॉलिड एंड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा? KCl and this is the 2 mole. Okay, your next example is, your next question is, when iron sulfate is heated, when iron sulfate is heated, it gives iron third oxide
सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, converts into symbolic equation. तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। व्हेन आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, FeSO4, एंड दिस FeSO4 इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट, एंड सिंबल ऑफ हीट इज ट्राइंगल को हम लोग सिंबल ऑफ हीट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस FeSO4 इज कन्वर्टेड इनटू आयरन थर्ड ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 एंड प्लस द सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज SO3। ये रिएक्शन क्या होता है, क्यों FeSO4 इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता क्या है और कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कि जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कि जैसे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग कुछ लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमने इसके बाद पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, कि सपोज हियर दिस इज आयरन इज 2, तो इसको 2 कर दें, एंड सल्फर इज हियर, सल्फर इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 4 2 जा 8 एंड हियर ऑक्सीजन इज 3 + 2 5 5 + 3 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ केमिकल equation. You can see here the first characteristic is reactant. So what is a reactant? Reactant means the reacting species which is react together during a chemical reaction. दिस इज नोन एज रिएक्टेंट। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन में जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखते हैं, जो आपस में रिएक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, द रिएक्टिंग स्पीसीज which is react together during a chemical reaction is called reactant। एंड रिएक्टेंट को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एंड इट इज रिटेन इन लेफ्ट हैंड साइड। इसको शॉर्ट में हम लोग LHS भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इन अ केमिकल इक्वेशन। ओके।
लेफ्ट हैंड साइड इन अ केमिकल इक्वेशन। अभी हम एक केमिकल इक्वेशन इसको समझेंगे। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट भी पढ़ लेते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद से कोई एक एग्जांपल लेके उससे मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो रिएक्टेंट के बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑन न्यू केमिकल प्रोडक्ट, न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म एंड दिस न्यू केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट। तो यू कैन सी हियर the reaction in which a new chemical substance is formed, a new chemical substance is formed is known as product। जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ओके। तो एक किसी एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल magnesium is Mg and Mg is react with oxygen to give magnesium oxide, MgO। तो here Mg and oxygen both are reactant और ये कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे दिस इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और यहाँ पे MgO है। MgO यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? ये राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और इसको यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे इट इज रिटेन इन राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड इन अ केमिकल इक्वेशन। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। सी यू कैन सी हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट एंड दिस रिएक्टेंट इज सेपरेटेड बाय प्लस साइन। सिमिलरली टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज आल्सो सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो फर्स्ट इज two or more reactants are separated by plus sign. Similarly two or more products molecules are separated by plus sign. And the last one is the reactants and products molecules are separated by arrow pointing towards the प्रोडक्ट साइड। मतलब क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में कैसे सेपरेट रहेगा? एक एरो से, और उस एरो का डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगा? प्रोडक्ट की तरफ से। तो इसको लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर द रिएक्टेंट and reactants and products are separated by an arrow
an arrow pointing towards product side, pointing towards product side। ओके, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल इक्वेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। एक होता है रिएक्टेंट जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एक होता है प्रोडक्ट जिसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, एरो से, जो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको केमिकल इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे अभी यही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें देखेंगे दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम अलग अलग होंगे। मैग्नीशियम तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, तो हमारे पास दो तरह का इक्वेशन आएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द अपर बेल आइकन एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।